Hey Radhe to all of you. Where are you guys? Join us. Once again, we are here to learn the past perfect continuous tense. Hurry up, hurry up, hurry up, guys. Hurry up. So let's start. Start writing. Open your notebook. Put heading. Divanshu, Pratibha, Ashish. Good morning, Radhe Radhe to all of you. Welcome, welcome, welcome. Right. Heading have you written? The past perfect continuous tense. Which tense? Yes. The past perfect continuous tense. Income tax inspector. Welcome. 5 viewers, 1 like. This is not fair. Written? Write note. This tense denotes this tense denotes this tense denotes that the work had been going on. The work had been going on. The work had been going on. Official Ronaldo high. The work had been going on from the period or point of time. The work had been going on from the period or the point of time. This tense denotes that the work had been going on from the period or the point of time. Written? ID. Write the ID. रहा था, रही थी, रहे थे. Wow, 6 viewers, 6 likes. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Sheetal. Thank you, most wanted. Thank you. रहा था, रही थी, रहे थे. ऑब्लिक हुआ था, हुई थी, हुए थे. हुआ था, हुई थी, हुए थे. Written? Welcome, welcome, everyone. Welcome. Rule. Subject plus had been. Subject plus had been plus MV4 plus object plus since oblique for plus time. Since oblique for plus time. In ID, guys, where you have written raha tha, rahi thi, ya hua tha, hui thi, before that you have to use say. Say. Written? Dash dash. Say dash dash raha tha. Say dash dash hua tha. इससे और रहा था के बीच में प्यारे बच्चों आएगा टाइम. व्हाट विल कम? टाइम विल कम. और टाइम आते ही कॉन्टिन्यूअस टेंस स्विच कर देना है आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है? जैसे मैं नाच रहा हूं. अब यहीं आ जाए मैं 2 घंटे से. आ गया ना? टाइम प्लस से. मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं. तुरंत बदल देना आप उसको.
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, रिडन। अब लिखिए एग्जाम्पल। मैं डैश डैश से रहा था। मैं डैश डैश से रहा था। रिडन। आई हैड बीन, I had been dash dash since morning, since morning. Written since morning. Now listen. Since morning इसी के नीचे जो मैं बोलूंगा आप उसी के नीचे लिखते जाना है। Since morning के नीचे और कहीं नहीं, ठीक है। देखिए, since 3 o'clock, since 3 o'clock, since childhood, since childhood. Then since last night, last night, since 15th August, since 15th August. How many have you written? 5. Done, done. Now, फिर एक हिंदी सेंटेंस लिखिए। मैं डैश डैश से रहा था। व्हाट्स योर नेम? मैं आपकी कोचिंग में आता हूँ। आरती शुक्ला। आयुष, आयुष शुक्ला। लिखिए, आई हैड बीन डैश डैश फॉर 2 years, 2 years, written for 2 years, for a decade, DECADE, a decade, for few days, FEW, few days, for 2 months, 2 months, for a long time, for a long time. Now see, 90% sentence, 95% you have written. What do you have to do? You have to use 10 verbs in that blank. Okay, that is space that you have left. 10 verbs you have to write. Can you make 10 sentences now? Do it. I had been सबके पहले लगा लीजिए. Make 10 sentences. Like for example, first sentence, I had been sitting since morning, had been playing since afternoon, had been dancing, laughing, crying, right? Taking, giving, buying, selling. नेहा द्विवेदी जी, राधे राधे। उदय जी, फुल कोर्स की जो फीस है अपनी प्रेजेंटली वो 4000 रुपीज है कंप्लीट कोर्स का। बट यदि आप टेस्ट देते हैं स्कॉलरशिप और उसमें 100 स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, सो आप वही कोर्स हमारा ओनली 500 रुपीज में भी कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू गेट एन ए ग्रेड। Prachi, I didn't sleep whole night. Trust me. Your tomorrow has come. Now I will wait for your father whole night.
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। उदय जी मोस्ट वेलकम। नेहा वेलकम। आरती शुक्ला जी वेलकम। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप डेली जुड़ा करें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी आपके कंपैटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो अच्छी चीजें देखें। देखिए हमेशा हम बोलते हैं कि आप फोन चलाइए, फोन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आप 2 घंटे 3 घंटे फोन चलाते हो तो फोन चलाने के बाद आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि मैंने 3 घंटे फोन चलाया तो सीखा क्या। यदि मैंने 3 घंटे फोन चलाया और केवल यूजलेस चीजें हमने देखी, राइट, ऐसी चीजों में हमने टाइम स्पेंड किया जिससे हमारे लक्ष्य का, हमारे एम का कोई लेना देना नहीं है, हमारे स्टडीज से कोई उनका लेना देना नहीं था, हमारे करियर से कोई उनका लेना देना नहीं था, तो ऐसी चीजें हम क्यों देखें, राइट? वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम इन वॉचिंग सच थिंग? सो इन्वेस्ट योर टाइम इन गुड थिंग्स। ये सोशल मीडिया कैन चेंज योर लाइफ। यदि आप अच्छे से इसका यूज करेंगे, अच्छे कंटेंट आप वॉच करेंगे, लर्न करेंगे, सो डेफिनेटली इट विल चेंज। व्हाट वी सी टुडे कि लोग आजकल देखते हैं आप वल्गर वीडियोस चीजें बनाते हैं और उसमें मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं। रीजन यही है कि लोग ऐसी चीजों को देखना पसंद करते हैं, तो लोग इस तरह बनाते हैं। यदि हम उन चीजों को देखना बंद करें, लोग डिस्करेज भी होंगे। अच्छे कंटेंट को हम एनकरेज करें, उसे प्रमोट करें, तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है चीजों को लर्न करने का, राइट? सो यहाँ आपको केवल केवल और केवल एजुकेशनल चीजें मिलेंगी। कहीं भी आप हमारे जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी हो रहा है वो एजुकेशनल हो रहा है। यदि हम स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए भी बच्चों को लेके जाते हैं संडे को, एवरी संडे, तो वहाँ भी हिंदी अलाउड नहीं होती, बच्चे वहाँ इंग्लिश ही बोलते हैं। साथ ही साथ वहाँ तरह तरह की गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, राइट? तो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग भी अच्छे कंटेंट्स देखें, अच्छी चीज़ों को वॉच करें, ताकि आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। आरती शुक्ला जी, नाइस, दैट्स गुड। आर यू रेडी गाइस? नाउ अब देखिए ये बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके 10 सेंटेंसेस ये बोलेंगे। आप भी सुनिएगा, देखिएगा कैसे ये बोलते हैं। आर यू रेडी? Who will speak first? Vijay. Yes, Vijay. Speak. I had been running since morning. I had been attending a class since 3 o'clock. I had been becoming curious since childhood. Very I good. had been suffering from fever since last night. Hmm. I had been improving my mistakes since 15th August. Very good. I had been learning English for 2 years. I had been writing a lot for a decade. Hmm. I had been operating a phone for a few days. I had been buying a cloth for 2 months. I had been preparing for SSC for a long time. Very nice. Proud of you. Very good. Sit down. Now, next, who wants to speak? Next 10 sentences. Bablu. Master Bablu. Yes. May I start? Shall I start? Yes, sure. I'd been studying since morning. I'd been speaking since 3 o'clock. I'd been speaking broken English since childhood. I'd been working since last night. I'd been I'd been coming to DSEL since 15th of August. I'd been learning English for 2 years. I'd been living comfortable life for a decade.
I'd been teaching for, I'd been coming to DSEL for 9 months. I'd been writing for a long time. Amazing. Wonderful, beautiful, adorable. Next, next, Sheetal. I had been studying since morning. I had been sleeping since 3 o'clock. I had been reading books since childhood. I had been waiting for you since last night. I had been longing to learn English since 15th of August. I had been preparing GD for 2 years. I had been searching job for a decade. I had been operating the phone for a few days. I had been coming DSL for 2 months. I had been making the sentences for a long time. Outstanding, indescribable. Next, 10 sentences. Dev. I had been play since morning. I had been ING. sleep ING, since yaar. I had been sleeping since 3 o'clock. I had been 10 sentences since last night. Making. I had been for a long time. I had been studying for 2 hours. I had been like tea or coffee, Liking. liking. I But we had don't been use sleeping liking. for 10 hours. I had been writing a letter. I had been playing cricket tomorrow. I had been coming to home since 15 August. Oh, really? Sure, sure. Yes, beta, yes. Our institute is next to Arya School. Yes, you're right. I had been learning English since 7 o'clock. I Hmm. had been following her since morning. I had been planning since last night. I had been collecting knowledge since childhood. I had been debating since 15 August. Okay. I had been joining DSEL for 2 years. I had been facing yes no round for 2 hours. I had been studying for a decade. I had been making notes for a long time. Outstanding, beta. Sumptuous, sumptuous. Very good. Next, who'd like to speak? Prashant. I had been playing since morning. I had been sitting since 3 o'clock. I had been making toys since childhood. I had been writing my homework since last night. I had been going to school since 15 August. I had been coming to DSL for 2 years. I had been driving car for a decade. I had been speaking for few days. I had been buying new phone for 2 months. I had been dancing for a long time. Wow. Very nice. That's great. Now next. Next. Subham's friend is saying, please, sir, make Subham speak the sentences. I had been making sentences since morning. I'd been studying since 3 o'clock. I'd been playing hide and seek since childhood. I'd been fighting with my sister since last night. I'd been helping everyone since 15th August. I'd been active for 2 years. I'd been writing for a decade. I'd been going for a walk for few days. I'd been learning maths for 2 months. I'd been bothering my brother for a long time. Thank you. Outstanding. Wonderful. Really. Loved it. Adorable performance. Now we have Subhash. I had been studying since morning. I had been dancing since last night. I had been crying since childhood. I had been monitored for few days. I had been playing cricket since 3 o'clock p.m. I had been eating chocolate since yesterday. I have been learning English for 2 years. Very nice, Subhash. Superb, yaar. I Superb. had been studying for a Nowadays, Subhash decade. works I hard. have been coming to yourself for a long time. Very good, beta. Proud of you. Now, Pushparaj, speak. How many sentences have you done? Two sentences? Three enough.
Enough three sentences. Speak. I had been coming to DSEL since morning. I had been operating phone since 3 hours. I had been speaking For topic 3 years. since last night. For 3 years. Shubham. Shubham, take the mic, please. Yes, Shubham. I had been playing since morning. I had been complete my work since 3 hours. Completing. Completing my work 3 hours. I had been playing badminton since childhood. Very good. Very nice, Shubham. I had been complete my work Completing. completing my work since last night. Very good. I had been Starting. starting workout in 15 August. Very good, beta. Nice. Nice, beta. Well done. Only verb. 95% sentence I have already given you. Only I verb. had been going since morning. I had been Right, playing Prashant? football since It's very morning. easy. I had been reading since 15 August. I had been making project Where's your since brother? last night. I had been learning past tense since 7 o'clock. I had been riding bicycle a few days. I had been walking for 2 months. I had been Speak in sleeping English. for a few minutes. I had been coming DSL for a Sleeping. long time. I had been How learning can he English sleep? for Now your a mama long is time. not worried Thank about you so his much. study. Hmm? She calls for homework, but she doesn't make her child wake up. I had been He's learning sleeping. English since morning. I had been snoring since he had been snoring since 3 o'clock. I had been going there since childhood. He had been studying since last night. I had been coming to DSEL since 15th of August. Anoop, hello, welcome. He had been playing for Welcome. 2 years. I had been living for a decade. I had been teaching for a few days. He had been buying a new phone for 2 months. I had been learning English for a long time. Naveen. Beautiful boy, Naveen. I'd been causing them dance since morning. I'd been sleeping since 3 o'clock. I'd been playing since childhood. I'd been suffering from headache from since last night. I'd been making strategy since 15 August. I'd been toiling hard for 2 years. I'd been making him understand for a decade. I'd been observing him for few days. I'd been reading magazines for 2 months. I'd been becoming lunatic for a long time. Wow, that's great. Next, who'd like to speak? Sure, Shwantika. Good morning, sir. Good morning. I have been working since morning. I have been writing since 3 o'clock. I have been playing since childhood. I have been party last night. Um, I have been in improve myself since 15 August. And I had been English speaking 2 years. I have been fooding for best big back of feed month. I have been Had been, study no? for last time. Had you are saying, no? Had been. Take my, take your arm this one, okay? I had been walking since morning. I had been having something since 3 o'clock. I had been running away since childhood. I had been getting injuries since last night. I had been I had been celebrating my birthday since 15 August. I had been using the phone for a long time. I had been going to college for 2 years. I had been improving myself for a decade. I had been mop and sweep for a few days. I had been typing on the computer for 2 months.
I had been playing since morning. I had been studying since 3 o'clock. I had been crying for chocolate since childhood. I had been completing my notes since last night. I had been I had been preparing for exams since the 15 August. I had been learning English for 2 month years. I had been studying for a decade. I had been going stadium for 2 days. I had been buying a car for 2 months. I had been making project for a long time. Wow. All have done? Who all are left? Come on, beta. Hurry up, Raji. I had been speaking English since morning. I had been writing since 2 o'clock. I had been playing to cricket since child. I had been singing the song since last night. I had been going DSEL since 15 August. Yes. Apita, take the mic. Stand up. I had been making sentences since morning. I had been speaking topics since 3 o'clock. I had been playing childhood. I had been singing a song last night. I had been going to school since 2:15 August. Wonderful. All of you have spoken? All? We have a topic, right? We will have yes no round of distance tomorrow, but we have a topic for debate. Should capital punishment be abolished? Why? How can you say group discussion? It's a debatable topic. It's a debatable topic. Like how? If somebody says that, no, it shouldn't be abolished. Okay, there should be capital. So a person who opposes can say, dear, when you can't give a birth to a baby, then how do you have the right to kill that particular baby? Right? You haven't given birth. Only mother has the right. If it is, then only mother can, because mother has given birth. Who are you to take the life of any human being? You can't take the life. And sometimes you can just say that, in India there are two constitutions, one for the rich, one for the poor, right? Rich people, even after doing scams like 1,000 crore, more than that, they hire renowned lawyers and come out of, on the bail. They don't go to jail. But a poor person spends his entire life to prove he's alive, right? Just because he's poor, he doesn't have that much money. So any, innocent person can be trapped, right? And given death sentence, capital punishment. This is not good, right? It should be abolished. And actually the criminals who commit crime, if they know that the crime I'm committing will take me to capital punishment or lead me to capital punishment, so they will kill that particular person. They won't leave eyewitness evidence. Why will they leave? Because Madhya Pradesh was the first state which made the law, if anybody rapes a girl below 14 years, minor girl, will be given capital punishment. So what is happening nowadays? The criminals, rapists who are raping girls below 14 years, they are killing them after raping, because they know that they will go to the police station, register an FIR, and later I'll be hanged. So if I don't leave any evidence or eyewitness, then I may escape, because the law needs eyewitness evidence, right? So that can save my life.
It has become all over India. First of all, Madhya Pradesh was the first state which introduced, but central government has also made this law that if anybody rapes a girl below 14, will be given capital punishment. So there are many, disadvantages, right, of giving capital punishment, because sometimes people use their money power and position to trap others. And if that person can't prove that he was not involved in that crime, he is hanged. And later, after his, death sentence, if matter comes to light that person was innocent, then who can bring back to the life that was lost? Right? Nobody can bring back that life. And in many cases, we see just a few months, ago, a person walked out of jail. Okay, he spent 20 years almost in jail, and the crime was what? Crime was, a fake particular charges were imposed on him. When thorough information was conducted, done, inquiry was done, he was innocent. But who can return those 20 years that he lost in the jail? Tell me, right? उसकी जिंदगी के 20 साल कौन लौटाएगा जो उसने जेल में बिता दिए? आज तो कोर्ट ने उसे वरी कर दिया, बोला उसका कोई क्राइम नहीं था, बट व्हाट अबाउट दोस 20 years, right? In India, as you can see, most of the laws are women centric, right? Just they say one thing and case is registered. Many fake cases are coming to light where women are, threatening their in-laws, right, and their husbands, just because they have affairs with someone else. And when they raise voice that you can't do this at my home, they just start threatening them. If you stop me from doing this, I will, register case against you, harassment case, dowry, domestic violence, right? Misuse of laws. So when in country like India, where openly people say there are two laws, one for the rich, one for the poor, how can we have capital punishment in countries like India? And you all know very well. You all know very well. Don't go so far. Few months ago, a girl's body was found at your Son River, naked body, no clothes on her body, right? What happened in that case? What happened in that case? Did you get any conclusion, anything? No. Why? Because there may have been some rich people involved, right? One person was beaten very badly in the police station. He died. And then protest was done at your Samrat Square. What happened in that case? What happened? Nothing happened. Why? Because the people who were involved, they were already in position, right? Powerful people. They were, having powers. So they misused their power. They just changed the case. They weakened that FIR and nothing happens. So how can we have such dangerous laws, right? Where easily power can be. So many times you must have seen Supreme Court of India and the High Courts of India have openly said that in these cases powers, the authorities have misused their powers, right? Misused their powers. So when we are living in a country like this, where easily powers can be misused and people misuse power to protect their kith and kins, their relatives, then anything can be done, right? Anything can be done. You see so many cases you can see in your neighboring, particular place where person has all the documents, legal documents of any property. That property belongs to him. He's showing that, see, my father, my great grandfather bought this property, and today some mafias, land mafias, have captured that property, and that person is not able to prove. Why? Because they're threatening, if you go to the court, we will kill your family and all people. Then there are so many things that you can speak, right? That capital punishment should be abolished, because at least
sooner or later, if the matter comes to light that person was innocent, so that person is in the prison, so can be released. But once a person is hanged, then how can you bring back to life? You can't bring that person to life, right? This is really impossible. Few months, few years ago, there was a case in Haryana where two women were traveling on the bus, and they just, started beating two, three boys. And what they accused them of, they accused them of molestation. They were molesting them. Okay, and even they were rewarded, felicitated by the government of that particular state. Okay, and then inquiry was conducted, because so inquiry was conducted after 6 months. When inquiry completed, okay, so what was the matter behind that? The people who were on that bus, they all blamed those two girls. They all blamed those two girls. They just said that this is not the first time they have beaten up boys. They very often beat boys. They show their rowdy, kind of attitude, and uh, this road trapism and all. And when those 3, 4 boys, they came out of the jail, what they said? They said, we were preparing for Indian Army. Now we are 24, 23, 24. Now how can we go there? Now our age is over. How can we go there? Think. Means we are living. इसीलिए मैं हमेशा बच्चों बोलता हूँ कि प्लीज, आज सोशल मीडिया के जमाने में आप रहते हो, कुछ आपको आंखों से दिख रहा है, उस पर भरोसा मत करो. सीरियसली बोल रहा हूँ. थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रखो, थोड़ा फैक्ट वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, फिर उसके बाद बात करो. क्योंकि बहुत सारे हमारे दुश्मन देश भी फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं हमारी चीजों को वो करने के लिए, और हमारे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में वायलेंस फैलाने के लिए. कुछ समय पहले ही आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि आपके नवोदय जो पर्टिकुलर स्कूल है, वहाँ बताया गया कि एक बच्चे ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, बिकॉज उसके साथ कास्टिज्म होता. टीचर्स वहाँ जो थे तो उसको रेसिज्म कमेंट्स उस पर करते थे, काइंड ऑफ थिंग्स, और उसने कोई किसी बच्चे की कुछ चीज़ चुरा ली थी, राइट. जब इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में पता चला कि वहाँ कास्टिज्म वाला कोई मैटर नहीं था. बात ये था कि उसने किसी अपने दोस्त की कोई सामान चुरा लिया था, तो क्लासमेट ही उसे ताना मारते थे, डेली उसे ताना मारते थे कि चोर है, ये देखो मेरा ये चुराया था. तो उस तानों से तंग आकर के उसने फांसी लगा. दैट वाज द मैटर. एंड न्यूज़ आ रही थी, सभी जगह दिखाया जा रहा था कि वहाँ लोगों ने नस्ली पर्टिकुलर कास्टिस्ट उस पर रिमार्क दिए और उसको ह्यूमिलिएट करते थे, वेयर इट वाज नॉट द केस. अब से वही मैं देख रहा था, मेरे कई स्टूडेंट्स के स्टेटस में चीज नाच रही थी, राइट. आप थे नहीं वहां, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, आप बस एक आपको पोस्ट आया और आपने उस पोस्ट को शेयर करना शुरू कर दिया. क्या पता आपके उस पोस्ट से कुछ लोग वायलेंट होकर के लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे को अपने आस पड़ोस में युद्ध करना शुरू कर दें. देन व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड हैपन? तो इसीलिए मैं आप सबको एडवाइस दूंगा बच्चों की, जो आपको एक चीज दिखे शुरू में, डोंट जस्ट ट्रस्ट दैट थिंग. भारत देश में तो इतना जस्ट सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, कि लोग ऐसी चीजों को भी वायरल बना देते हैं, ट्रेंडिंग. अभी इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि चुड़ैल आती है, बर्थडे बना रहे थे तो आकर के मार पीट के चली गई, उनको घसीट दिया और उसके पोस्ट वायरल हो रहे हैं. अब सब लोग, कोई था वहां तो देखा था, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मेरे खुद के दोस्त को मार के चली गई. अभी वो पोस्ट यहाँ सीधी की बस के नहीं है. अभी कल ही मैं देख रहा था फेसबुक, वो आपके हरियाणा में भी हुआ है, जिंद जगह कहीं है, वहां भी एक. दिस इज रबिश थिंग. ये कुछ नहीं है, मारपीट हुआ है लोगों में, आपस में दुश्मनी रही, कोई आके मार के चला गया, मुंह से बांध के, बोलते भूतनी आके मार के चली गई. कैन यू बाय दीज थिंग्स? लगता है ये चीज होंगी, होती हैं? नो. देखिए बच्चों, मैं भी ऐसा ही था, देख करके रिएक्ट करने वाला. बट जब मेरे खुद के पिताजी के साथ ऐसा हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया इज सच ए डेंजरस थिंग. हुआ क्या, माय फादर वाज स्टेशन्ड एट योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ओके, उनकी ड्यूटी थी वहाँ. एक फैमिली वाले अपने किसी एक पर्सन को लेके आते हैं, वो खेत में काम कर रहे थे, उनके खेत में इलेक्ट्रिक पोल था, उसमें करंट आ गया तो उनको करंट मार दिया. अब जैसे ही वो लेके आए, स्ट्रेचर में उन्हें लिटाया गया, तो डॉक्टर आए,
डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर है तो एमबीबीएस किया है, नीट क्वालिफाई किया है, राइट, तब जाके उनको मिली है। उन्होंने चेक किया 5 मिनट पूरा सब कुछ और उन्होंने बोला कि ब्रॉड डेड, वो पहले ही खत्म हो चुके थे, राइट। अब उनका जो लड़का था डॉक्टर्स के घर माने लगा, डॉक्टर को बोला नहीं नहीं तुम एडमिट करो, ऐसे कैसे एडमिट करो। वो बोले भैया कि दैट पर्सन इज नो मोर, व्हाई शुड वी एडमिट व्हेन दैट पर्सन इज नो मोर। सो उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। डॉक्टर का कोई कॉलर पकड़ेगा तो पुलिस की ड्यूटी लगी है उसे बचाने के लिए। तो मेरे पिताजी और गार्ड था वो जो वहां रहते हैं वो सामने आए, तो उसने गार्ड को लात मार दी, तो गार्ड गिर गया। मेरे पिताजी ने क्या किया कि उसको झुका करके उन्होंने 2 थप्पड़ उसे दे दिया। अब इतने का किसी ने वीडियो बना लिया, अब इतने का वीडियो बना लिया, इतने में मीडिया वाले घूमते ही रहते हैं, मीडिया वाले आ गए, पूछने क्या हुआ, तो वो तुरंत घड़ियाली आंसू बहाने लगा, रोने लगा। मैं पिताजी को लेके आया, मेरे पिताजी जिंदा थे, ये लोग एडमिट करने में आनाकानी करते रहे, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, ऐसा है वैसा है वैसा है। दैट वीडियो बिकेम वायरल, किसान के साथ ऐसा करते हैं, देखिए पुलिस वाले, ये गुंडा है पुलिस, ऐसा है। एंड देन यू नो 1 घंटे के अंदर ही एक पर्टिकुलर ऑर्डर आता है कि उनको लाइन अटैच कर दिया जाए, पिताजी को लाइन अटैच। फिर उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, इनिशिएट कर दी। इंक्वायरी इनिशिएट की तो फाइनली जा करके 2 से 3 दिन में जब पूछताछ हुई वहां, तो जितने लोग थे इंक्लूडिंग डॉक्टर सब बोले, उन्होंने रियल स्टोरी बताई, तब जा करके उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ही वॉज रीइंस्टेटेड इन द सेम प्लेस, राइट। अब सोचिए, एक दाग तो लग गया ना, जबकि कोई गलती नहीं थी। हम टेलिंग, मैंने पापा को फोन लगा के बोला भी कि आप क्यों चले गए थे। बोले यदि मैं ना जाता तो भी मेरी नौकरी जाती, क्योंकि भाई मुझे लगाया ही गया है डॉक्टर को बचाने के लिए। यदि मैं कहीं इधर उधर हो जाता तो बोलते तुम कहाँ थे, लोग आए डॉक्टर को मार के चले गए, नहीं, और चला गया बचाने तो भी कांड हो गया कि भैया उन्होंने उनको मारा है। जबकि आप वीडियो आप देखेंगे, वो है आज तक न्यूज चैनल हर जगह दिखा, राइट, वही वही सीन दिखा रहे हैं कि झुका के उन्होंने 2 मुक्का उसको मारा। नो डाउट उन्होंने 2 मुक्का मारा, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप देखोगे आप, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े थे, तो वो धमकी दे रहे थे कि तुम लोग को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम जानते नहीं हो, मैं पता नहीं कोई पार्टी का नेता हूँ, राइट। इस नेतागिरी में डॉक्टर को भी मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, गार्ड को भी मारा। शायद हो सकता था वो ना आगे आते तो उनको भी, पिताजी से भी लड़ जाते, राइट। और कहानी फिर उन्होंने मीडिया के सामने ऐसी आंसू बहा बहा के दिखाई कि मीडिया ने उसी चीज को कट करके वायरल करना शुरू कर दिया। एंड दिस थिंग, अब रिटायरमेंट के मुश्किल से 6 महीने पहले फिर पिताजी हमारे बोले कि अब यहीं से रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बिकॉज ही वेरी इनोसेंट टाइप ऑफ पर्सन, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। सोचिए, मैं कमेंट पढ़ रहा था जब वो न्यूज़ दिखाई जा रही थी, अरे ये गुंडे हैं, पुलिस तो इतनी गंदी गंदी गालियां, इसको तुरंत ऐसे कर देना चाहिए, उसको तुरंत ऐसे कर देना चाहिए। अब सोचिए ऐसी बात, अरे भैया पुलिस वाले को क्या मिला है कि वो पुलिस वाला एक पेशेंट के रिश्तेदार को मारेगा, आप सोचो उन्हें क्या मिलेगा। आप कॉमन सेंस लगा लो कि पुलिस वाले को एक पेशेंट के रिश्तेदार को मारने से क्या मिलेगा। Why will he be unnecessarily? This was the story, right? और ऐसे एक्शन हो जाता है। ऐसे मैं 2-3 लोगों को अपने टच में जानता हूँ, मेरे कॉलोनी में रहते थे पुलिस वाले, जिन्होंने कोई कांड, मेरे अंकल सस्पेंड हो गए थे एक बार। अब देखिए, जेल में क्रिमिनल था, पुलिस आजकल क्रिमिनल को मारते नहीं है, वो सोचती है हमें क्या है, हम पकड़ के लिए जेल में बैठ दिए, कोर्ट जाने कचहरी जाने मेरा कौन सा रिश्तेदार है, हम क्यों मारे, क्यों मारे भाई, हमें क्या मिलेगा, राइट, मारती नहीं। अब एक बंदा था जेल के अंदर था, जेल के कपड़े उतार के, वो जो कपड़े मिलते हैं उसे उसे फाड़ के उसने रात में फंदा बनाया और पंखा उसमें लगा हुआ था उसमें झूल गया, झूल के मर गया जेल के अंदर। अब उसके परिवार वाले ब्लेम करने लगे कि पुलिस ने मारा है उसने, राइट। तुरंत सस्पेंड हो गए, जितने भी थाने में लोग थे सब सस्पेंड हो गए। जब इंक्वायरी हुई, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो बोले इसको कोई इंजरी नहीं है, कोई ऐसी इंजरी नहीं है जिससे पता लगे कि उसको मारा है, टॉर्चर किया गया, राइट। लेकिन बदनामी तो हो गई ना, न्यूज़पेपर में हेडिंग आ गई, पूरे सोशल मीडिया में छा गए कि इतने लोग सस्पेंड हुए, उनमें से एक मेरे अंकल भी थे। मीन्स ऐसा है कि कपड़ा भी नहीं पहना सकते, जिसे मरना ठान लिया है कोई तो कहीं मर जाएगा, फिर उसने ठाना है तो जेल की जो सलाखें हैं उसी में सिर पटक पटक के मर सकता है वो, मुझे मरना है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। लोग बोले ये बताओ कितने निर्दयी, पुलिस की नौकरी बताओ कितनी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू,
टफ। पुलिस कुछ भी कर दे तो पुलिस वालों का ही सस्पेंड सबसे पहले, सबसे आसान होता है टारगेट नेताओं के लिए पुलिस को, और लोगों के लिए भी पुलिस से इतना गुस्सा है कि पुलिस में, अरे भैया आप देखो तो पुलिस वाले की नौकरी 15 आवर्स दे हैव टू वर्क, राइट। एक्शन नहीं लिया तो ऊपर से एक्शन हो जाएगा, एक्शन ले लिया तो जनता के दबाव से नेता एक्शन करवा देंगे, राइट। करे तो करे क्या, पुलिस क्या करे, पुलिस को बैलेंस बनाना। इसमें जितने भी पुलिस वाले हैं आप देखेंगे भारत देश में, उसमें 40% ऐसे हैं जो बेचारे डायबिटिक हो चुके हैं या आपके बीपी के पेशेंट हैं। इतना इतना ज्यादा, राइट। मेरे अंकल रिटायर हुए, रिटायरमेंट के 1-2 साल बाद ही उनको हार्ट अटैक आया, बच गए, बाइक पास हुआ, हार्ट अटैक आया, ये सब उसी की वजह से, सो मच वैसे, राइट। अब एक बार उन्होंने 70-80 लाख रुपीज का गांजा पकड़ा, एक पूरा ट्रैक्टर भरा था गांजा पकड़ा उन्होंने रेड मारी, गांजा पकड़ लिया। अब गांजा पकड़ लिया तो रातों रात दो उनका ट्रांसफर हो गया भोपाल। पता चला कि वो गांजा किसी नेता के थ्रू बिक रहा था। हम नेताजी इन्वॉल्व थे, नेताजी के पास गए, बातचीत की तो पता चल, नेता बोले कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, तुम क्यों कैसे ऐसे एक्शन ले लिए, एंड बोले साहब उनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बोले दोबारा सोच समझ के थोड़ा सा, जब चुनाव हम होता है तो वो पैसे देते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। इट्स टू टफ जॉब ऑफ पुलिस। आपको लगता होगा एक्शन लें तो भी प्रॉब्लम है, एक्शन ना लें तो भी प्रॉब्लम। दे वांट टू डू ऑनेस्टली। आप में से ही कोई जो बच्चा होगा पुलिस में जाएगा, वो सोचेगा मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करूंगा, बट जब वो सिस्टम में घुसता है ना, तो सिस्टम उसे करप्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारी बोलेंगे आप कल लिया के दो। अब आपको हर दिन 400 से 500 रुपये अधिकारी को देना है तो क्या करोगे? अपनी जेब से थोड़ी दोगे, यू विल गो एंड फोर्स समबडी, राइट। अब आप आए थे कि मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, पुलिस जॉब करूंगा, यहाँ तो मैं एक दलाल बन गया हूँ, इनके लिए वसूल के देना है, उनको नहीं दिया तो उनकी सस्पेंशन करवा देंगे, और अगर जो फंस गए तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेगा, नौकरी आपकी गई, राइट। डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग। टू टफ जॉब। यदि आपको सीरियसली एंजॉय करना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इधर जाओ, इतना प्रेशर नहीं है वहां। आपको केवल आतंकवादियों से झेलना है, यहाँ तो आपको लोगों से भी झेलना है, सिस्टम से भी झेलना है, अधिकारियों से भी झेलना है, पॉलिटिशियन से भी झेलना है, आपको सबसे लड़ना है। टफेस्ट जॉब, मैं तो सबसे टफ जॉब पुलिस की मानता हूँ। ईमानदारी से करके बिना दाग लगाए अपनी वर्दी में रिटायर हो जाए ना, तो पुलिस वाले को पहले जाना चाहिए संगम और स्नान करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ रिटायर होने के पहले पहले लोग सस्पेंड करा देते हैं। Some departmental, people, they feel jealous of you and your progress. They start, making plan. They start conspiring against you and get you trapped. Very corrupt system. Anyway, so that I was just telling कि जब सोचिए इस तरह के हम तंत्र में रहते हैं, where evidence can be tampered, right? Eyewitness can be bullied. कई ऐसे केसेस हैं। सतना में मैं पापा के साथ कभी कभी बैठता हूँ, खाली समय बताते हैं कि खुले आम सामने वाले ने एक का मर्डर किया, ठीक है। गवाही थे 4 लोग, जिन 4 लोग को गवाही देनी थी उनके घर के आसपास उनके गुर्गे राउंड लगाने लगे और वो थ्रेटन करने लगे, रिपोर्ट गए और दिया तो फिर हमें तो ऐसे ही रहना है, वी विल फिनिश। वो कोर्ट में गए और हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं वहां था ही नहीं। अब ऐसा है तो ऐसे में आप कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं। सो ये कैपिटल पनिशमेंट ओनली इनोसेंट लोगों के लिए है, गरीबों के लिए, नॉट फॉर द रिच। आप नहीं सुनेंगे कि किसी अमीर आदमी को, करोड़पति आदमी को इस देश में फांसी की सजा हो गई। डू यू लिसन एवर? वो बोलते हैं तुम केस कर दो जाओ। मेरी खुद की नीस के केस में सामने वाला एक बैठा हुआ था, यही शादी हुई थी आपकी सीधी में ही, उनको जिंदा जला दिया गया। जब हम लोग गुस्सा हो रहे थे, पुलिस वहां आई थी कि इनको हम खत्म फांसी दिलवाएंगे, करवाएंगे, तो वहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन था, थोड़ा पावरफुल था, बोला इनको रो लेने दो, गा लेने दो, कोर्ट जाएंगे ना, कोर्ट में सब कुछ हो जाएगा। मीन्स जब वहाँ केस जाएगा तो वहाँ हम करके और इधर उधर कर लेंगे। एंड दैट हैपेंस। जब आपको पेशी के लिए जाना है, एवरी टाइम आ रहे हो, आप बार बार आ रहे हो,
और वहाँ वो नो, उन्हें कुछ नहीं करना, दे प्ले द गेम, मनी पावर, कोर्ट में मनी में। कई ऐसे लॉयर्स हैं आप देखोगे जो पैसा ले लेते हैं अपने क्लाइंट से और सामने वाली पार्टी से भी पैसा लेकर के अपने क्लाइंट के केस को वीक कर देते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने ही एक वकील को सजा दी है, उसने कम से कम 50 से ज्यादा लोगों को फेक केसेस में फंसवाया, जानबूझ के लोगों से कह कह के कि इन्हें फंसाओ ताकि उनसे पैसा लिया जा सके। उसे कोर्ट ने अभी गिल्टी पाया है, उसको सजा दी है। अंडरस्टैंड द सिस्टम। So this is the thing that you have to understand. We are living in a country like India where things can be changed, right? रातों रात तालाब गायब हो जाता है. You see people say, where is my pond? Give me my pond, because in documents one pond has been made and there is no pond, right? रातों रात सड़क गायब हो जाती है. These kind of things happen. वहाँ बोलते हो capital punishment is very dangerous, right? जो सपोर्ट कर रहे हैं they will say ठीक है, यू आर सेइंग कि भैया कैपिटल पनिशमेंट माँ को अधिकार है, लेकिन डिड ही हैव द राइट टू किल दैट पर्सन? जिसको उसने मार दिया, क्या उसकी जिंदगी नहीं थी? राइट, उसकी भी तो लाइफ थी, आप फेवर करेंगे, उसकी भी लाइफ थी। देखिए, नो डाउट कोई भी चीज बनती है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, बट हम देखेंगे मेरिट्स, मेरिट्स यदि 80% है, 20% डिमेरिट्स है, उस चीज को हम लेके चलेंगे, उसको हम लेके चलेंगे। हम 20% का नहीं देखेंगे कि 20% या 10% ऐसी चीजें होती हैं। वी विल टॉक अबाउट मेजोरिटी, इसलिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्रिमिनल लाइक अजबल कसाब, टेररिस्ट, राइट, other terrorists who kill 200 300 plus people, they will enjoy in the jail. That in this country we can't be hanged, there is no capital punishment, right? And people themselves say, गुस्से में आके लोग बोलते हैं कि मैं होता तो गोली मार देता। जब गोली मार देते तो फांसी हो रही है, तो फिर क्यों आपको दिक्कत है? गोली मारना इज इक्वल टू फांसी, कैपिटल पनिशमेंट। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। ऐसा बिल्कुल मत बोलो, आप तो गूगल नहीं, चैट जीपीटी है आज, टुडे यू हैव यूट्यूब, सोशल मीडिया, इतना सब कुछ है, वहां देखो कितना डिबेट होती है। अभी ये जब लॉ बना तो इस पर बड़ी डिबेट हुई है कि यार ये खतरनाक लॉ है, इस तरह का लॉ नहीं बनना चाहिए, इससे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई किसी को फेक रेप केस में फंसा सकती है, कोई लड़की ने फंसा दे कि हुआ है, और वो जबकि वो कंसेंट से हुआ था, म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट, फिजिकल रिलेशनशिप। आज वो बोल रही कि इसने रेप किया, तो कैसे प्रूव करेगा उसने नहीं किया है, राइट? क्योंकि भैया उसके स्पर्म और उसके पर्टिकुलर उसमें पाए जाएंगे, और जब पर्टिकुलर टेस्टिंग होगी पता चला कि हाँ उसके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप ना है, आप प्रूव कैसे करेगा कि वो कंसेंट था या फोर्स था, राइट? इट बिकम्स टू टफ, कोई नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि हाँ कोई था नहीं जिसने देखा हो, बट हाँ उसके साथ ये चीज हुई है, फिजिकल रिलेशनशिप सामने वाले ने बनाया। अब कंसेंट मीन्स उसकी मन से हुआ या फोर्स हुआ, ये प्रूव कर ही नहीं सकता कोई। उसके अलावा तेरे सामने वाला कह दी कि वैसा हुआ है, वह अभी मुझे एक स्टूडेंट अपने बता रहे थे, पढ़रा साइड हुआ, लड़के थे, माइनर थे, दे हैड रिलेशनशिप, फिर पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़की ने लड़के को ब्लेम लगा दिया कि रेप थी, रेप थी, माइनर थे दोनों, 15 के थे, रियल स्टोरी हम थे, पढ़रा की। तो वो लड़का जेल चला गया, बाल सुधार कर, जेल हो गया, जबकि वो दोनों रिलेशन, पर वहां कौन प्रूव करे कि सामने वाले ने फोर्स नहीं किया, म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था? इट बिकम्स टू टफ, misuse. Anyways, is it enough for today? So that I want all of you to Google and use chat GPT, social media or TV